Hello children, today we are going to start with chapter 15, that is role of the government in healthcare. So in this chapter, let's talk about the healthcare services. So health, it is an state of physical and mental well-being. Our health is affected by numerous factors. Just if people get clean drinking water, a healthy diet and clean pollution-free environment, so what happens? They are likely to be healthy. In contrast to this, those living in unhygienic condition, without access to clean water or healthy food, they all are prone to illness. वो क्या होता है कि बीमार हो जाता है. आपने देखा अगर आप गंदा पानी पियोगे और अनहेल्थी खाना खाओगे तो you will get sick. So clean, in order to prevent and treat illness, we need what? We need proper healthcare facilities such as health centers, hospital, ambulance and blood banks. What we need qualified and experienced doctors, nurses, health workers and other health professionals who can diagnose, advise and treat our illness. So we also need the medicines and medical equipment that are necessary for treating patients. Health also includes इसमें mental health भी है. Being lazy, dull, anxious, confused, they all are not signs of mental health. We should be active and in good spirit without any mental strain. So in democratic country, when people elect their own government, what they accept it to work for the welfare. Now, healthcare services. What are the healthcare services? So in the country like India, healthcare is a very challenging task. ये सबसे challenging task है for the public also and the private hospitals also. So if we talk about healthcare centers which are owned by individual, इनको हम primary health centers कहते हैं, means PHCs कहते हैं, right? Now, what are its strength and weakness? So, India क्या है? Largest number of colleges आपको देखने को मिलेंगे medical studies के. How many? We have 30,000 new doctors qualify every year, right? A number of healthcare facilities. Weakness क्या है? भाई डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन weakness क्या है कि सब अर्बन एरियाज में काम करना पसंद करते हैं. Because doctor in rural areas is very less and the people living there have to travel. भाई गांव से लोगों को भाई अर्बन सेंटर्स में आने के लिए बहुत टाइम लगता है. Next year, number of healthcare facilities has grown considerably and in 1950 there were 2,717 hospitals. In 1991, we have 11,174 hospitals. In 2000, the number grew up to 18,218 and India have estimated 70,000 hospitals. So about 5 lakh people die from tuberculosis. मतलब 5 लाख लोग हर साल ट्यूबरक्लोसिस से मरते हैं. And unchanged since independence, India has 15 billion cases of malaria every year. हर साल 15 million cases होते हैं. Now India receive large number of medical tourists who came for treatment in some of the renowned hospitals. 21% of communicable disease are waterborne. कैसी होती है? Waterborne होती है. The availability of clean water to a large population is the main cause of such disease. इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का. बस हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया आर अंडरनरिश्ड और उनको एक प्रॉपर और एजुकेट बैलेंस डाइट नहीं मिलती है. नाउ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज. गवर्नमेंट सेटअप डिफरेंट. देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है, अलग अलग टाइप की पब्लिक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है. अगर हम विलेज लेवल पे बात करें, सो एट विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स दैट आर यूजुअल वेयर देयर इज यूजुअली अ डॉक्टर, एक नर्स होती है और एक विलेज हेल्थ वर्कर होता है. उनको ट्रेन करा जाता है कि हाउ यू विल डील विद द कॉमन इलनेस ऑफ द पीपल एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स. यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, राइट, वेयर सुपरवाइजर ऑल द हेल्थ सेंटर्स. एंड लार्ज सिटीज हैव मेनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जहाँ पे आपको एडवांस और स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज भी देखने को मिलेगी. Like if we talk about development of new medical procedures, technology have enabled India to make a great progress in medical science. So first Indian blood bank was established during the World War II और कोलकाता में हुआ था. And another largest सबसे बड़ा है Rotary Blood Bank in Delhi. Now private health services. If we talk about private health services in India, a wide range of private health facilities exists. The urban area have large number of doctors who work for private health facilities. Such facilities are owned by कौन own करता है? Individual or business organization. In private hospital, patients have to pay lot of money for every service that they use. Today, जो presence है आपका private facilities का can be seen all around. Many hospital and nursing homes are part of private healthcare and what it provide facilities जैसे कि आपका blood test, X-ray, ultrasound.
यहाँ पे आपको लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल शॉप्स भी देखने को मिलेंगे जो मेडिसिन बेचती हैं. एज पर द लॉ मेडिसिन शुड बी सोल्ड ओनली एज पर प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डॉक्टर. नेक्स्ट इज इक्वालिटी इन हेल्थ केयर. सो वी हैव प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स जो इंक्रीज कर रहे हैं मच मोर रैपिडली देन द पब्लिक healthcare centers. At many places, government-owned hospitals are not there. Hence, people are forced to opt for private healthcare facilities. क्योंकि जो cost है treatment की वो बहुत ज़्यादा high है. Now, similarly, it is not only the lack of money जो prevent करते people को from getting proper medical treatment, लेकिन कुछ number of causes भी है. Right? So, we have many villages that are afraid of visiting medical centers and have faith in their local doctors. who at times do not have proper knowledge. तो इनको बहुत बार क्या होता है प्रॉपर नॉलेज भी नहीं होती है. वुमेन्स आर नॉट टेकन टू डॉक्टर इन प्रॉम्प्ट मैनर. जो उनका हेल्थ केयर कंसर्न है उसको लेस इंपॉर्टेंस दी जाती है. सम एरियाज डू नॉट हैव मेडिकल फैसिलिटीज. मतलब लोगों को वो अवेयर ही नहीं है. नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक पीपल अवेयर. अब गवर्नमेंट क्या करिए लोगों को अवेयर करिए कि भाई क्या क्या फैसिलिटीज तुम उनका यूज करो. राइट. Like number of small clinics run by the local government may be encouraged. Condition of public health center should be improved so that poor people do not need to go to private clinics and hospitals. जिससे जितने भी poor लोग हैं वो private centers पे ना जाएं, government centers पे जाएं. Right? So this is all in this chapter. Hope you understood. Now we'll meet in the next class. Thank you.